Inspires that I need to look at your documents, please ask for my number from the control room and then give me a ring after the show is completed, and we can have a more thorough discussion and I can arrange to see your documents. Those are a couple of caveats, but as always on this show we get a number of calls. We get a lot of calls on immigration law matters, which is fantastic, but on this show I should be able to cover a whole range of matters ranging from immigration law, family law, personal injury matters. So whatever your questions are, please feel free to give me a ring. If it's a second opinion that you need, again, that's not a problem at all. We're here to give some guidance in relation to the queries that you have. Now, as I said, we normally have a topic which is of interest, hopefully topical as well. And today, like last week, we initially started to show last week based on the coronavirus, COVID-19, and the implications that it's having specifically on the legal system, and in particular immigration matters and other matters as well connected to the legal process. Specifically, what I want to do initially is speak about the problems that are coming up. Because in practice, over the last few days, increasingly clients are ringing us relating to the problems which have now arisen because of there being a bit of a shutdown as far as a number of businesses are concerned, government offices closing down, visa centres closing down. So a whole range of issues have now come up, which I have to say, even a couple of weeks ago, most people wouldn't have thought about, would have been completely unexpected. But clearly there are issues coming to light now. So over the last few days, we've had a number of queries, and I thought the best thing to do, as we want to keep this show as topical as possible, let's look at those problems which are coming to light with the coronavirus and the immigration system as we have. Now, if you have questions which are related to other matters, absolutely fine. Please do feel free to give me a ring. So what kind of questions are we receiving? What kind of queries are we now receiving? Mainly, it appears to be the case that it's to do with applications that need to be submitted, and there may be a deadline because somebody's visa is expiring, or there may be a deadline because they want to make an application within a certain period of time because they feel that their documents might run out. So most of the problems, it's nothing to do with general advice, most of the problems at the moment seem to be to do with applications, and in particular they seem to be connected to those people who are in the UK at the moment. We'll look at those people who are outside the UK separately, but a lot of the problems relate to those who are in the United Kingdom at the moment. They have a visa, they've got leave to remain, and that leave to remain is due to expire within the next few days, within the next few weeks, within the next few months. Now, that seems to be presenting two specific kind of issues. The first is the practicalities of getting their application in, finding a lawyer who is able to see them, a lawyer whose office hasn't shut down, so a lawyer who's able to see them and get the application in. And then there are practicalities relating to the biometric enrollment that you have, where you need to go into the visa centre to submit your passport as well, issues about whether those centres are open or not. So that's one issue which I'll look at, the practicalities surrounding the submission of applications. And the second issue is relating to the financial requirement. And over the last few weeks, we've looked at the financial requirements which apply to visa applications, how you need to be earning a certain amount of money, etc. And if you think about it, one of the things that's happened as a result of coronavirus spreading is a lot of businesses are closing down. A lot of businesses are making people redundant or reducing their hours. Now that has an impact on whether they are able to meet the financial requirement when the extension time comes along. So there are two distinct problems: the practicalities of submitting an application, and issues relating to whether when you apply for your extension,
will you meet the financial requirement, because you might have lost your job, your hours might have gone down, or something else might have happened. So specifically, those are the two big issues, and I've received numerous calls, numerous messages relating to that already. Now, on the first issue, which is the practicalities of making an application before the visa expires. Now, there are serious implications for somebody whose visa expires and they haven't submitted an extension application. Serious issues. You become an overstayer. Potentially, if you make an application after your visa is expired, that visa may not be granted. Certainly, if you don't have children, it may not be granted. Secondly, your right to continue working legally in the United Kingdom comes to an end as well once your visa runs out. Thirdly, if the Home Office finds out there are issues about enforcement action being taken by the Home Office, stuff you might have heard in the news about the measures that the Home Office can deploy, from cancelling your driving license to closing your bank account, etc. So there are very severe problems that can arise, or there are severe consequences of becoming an overstayer. So in light of that, what we are saying to clients is that come what may, you must submit your extension application in time. Whatever happens, you can't miss that deadline. Now, a lot of lawyers are working remotely at the moment, they may not be seeing clients in the office anymore. And I'll look at how we deal with that after I've taken the first call. Hello, Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Brother, I want to ask one question. I called you before, okay, and thank you very much. Jazakallah khair. You just answered me everything. Yeah. I just want to confirm about my wife's visa, spouse visa. Yep. And she's going to the indefinite side now. Okay. And just want to ask about the income, 18,600. Yep. वो जो 18,600 की इनकम है, उसके बारे में मुझे आपसे पूछना था कि मेरी और मेरी वाइफ की मिला के हो जाएगी जी, okay. और मेरी वाइफ जो है वो अभी फरवरी से उन्होंने स्टार्ट किया है जी, okay. Okay. और मैं जो हूँ लास्ट सितंबर से जॉब कर रहा हूँ जी जी ठीक है तो ठीक है। हमारी 6 महीने की स्टेटमेंट जाएगी या 1 साल की? जी, वो आपका जो एप्लीकेशन डालना है वो कब डालना है? वो आप समझ लीजिए कि लेस देन अ ईयर है, अगस्त सितंबर में। सो वाइफ ने अगर फरवरी में काम शुरू किया तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगर आप एप्लीकेशन जब डालेंगे ना, जब एप्लीकेशन डालेंगे वो टाइम पे अगर वाइफ के एम्प्लॉयमेंट में 6 मंथ्स हो गए तो आपको सिर्फ 6 मंथ्स के डॉक्यूमेंट्स ही सबमिट करने पड़ते हैं। सो ये इम्पोर्टेंट है ना कि एज एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन अगर वाइफ के 6 मंथ्स हो गए तो फिर 6 मंथ्स के डॉक्यूमेंट्स ही सबमिट करने पड़ते हैं आपको। सो अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल मिडिल ऑफ फरवरी में उसने काम शुरू किया, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, तो मिडिल ऑफ अगस्त में उसका 6 मंथ्स कंप्लीट हो जाएंगे ना। सो तो हमें पूरे साल का शो नहीं करना होगा? नहीं। इसमें है ना, द मेन इशू इज दिस कि एज एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन जिसकी इनकम पे आप रिलाई करते हैं, आपकी इनकम पे, वाइफ की इनकम पे, जिसकी भी इनकम है, वो पर्सन ने 6 मंथ्स के लिए कंटिन्यूसली काम किया है या नहीं, वो क्वेश्चन है। अगर 6 मंथ्स के लिए एज एट द डेट ऑफ एप्लीकेशन उसने काम कर लिया है, 6 मंथ्स एंड 1 डे, 6 मंथ्स एंड 1 डे, जो भी है, अगर 6 मंथ्स कंप्लीट हो गए सो दोनों की इनकम 6 मंथ्स के ही पर ही बताने की जरूरत होती है। All right. So this is absolutely fine. After 6 months we can apply. We don't need to show the 1 year hold. No, 100% you don't. Definitely 6 months. So employment letter, 6 months wage slip, 6 months bank statements. You got to make sure कि जो income आ रहा है कि it either goes into the bank या तो आप पैसे exactly cash डालते रहो। Okay. अच्छा, आपसे मैं क्लियर कर दूं कि ये अभी इंडेफिनिट के लिए जा रही हैं। जी। इंडेफिनिट अप्लाई करना है। जी। तो उसमें भी वही 6 मंथ का ही रूल लगेगा? सेम है। इनिशियल एप्लीकेशन, एक्सटेंशन, इंडेफिनिट, वो जो इनकम का रूल है ना वो सेम होता है 100%। ओके। और एक चीज़ और है, अभी इन्होंने कोई अनाउंस किया है 80% गवर्नमेंट ने जो लोग कोरोना वायरस की वजह से, इसकी क्या है और कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए? इसमें जो है ना 80% जो है ना वो एम्प्लॉयर अप्लाई करेगा ना,
वो एम्प्लॉयर अप्लाई करेगा। सो इसमें क्या होगा कि वेज जो आपको मिलता है वो वेज तो नॉर्मल ही मिलता रहेगा, राइट, आपको वेज। सो एम्प्लॉयर जो है वो 80% के लिए अप्लाई करेगा। सो इसमें दो चीज़ होती है ना, और ये क्लियर नहीं है कि एम्प्लॉयर 100% वेज देगा और 80% एम्प्लॉयर को रिफंड मिलेगा, या तो एम्प्लॉयर 80% ही देगा और वो 80% वो गवर्नमेंट से लेगा। वो क्लियर नहीं है क्योंकि उसने अभी तक डिटेल पब्लिश नहीं किए हैं कि एग्जैक्ट स्कीम क्या है। हाँ जी। सो इसमें देखना पड़ेगा ना कि लेट्स से किसी की इनकम £1000 है, तो एम्प्लॉयर 1000 देगा और उसको 800 मिलेंगे वापस, या तो एम्प्लॉयर 800 देगा और 800 उसको वापस मिलेगा। इट्स अनक्लियर। मॉर्निंग में हमने वो हेल्पलाइन को फ़ोन किया था, मगर ऑब्वियसली वो तो बिल्कुल यू कैन गेट थ्रू कंप्लीटली। जी हाँ, बहुत कम होता है मेनली कि ये एम्प्लॉई जो है वो अप्लाई नहीं करेगा, बेसिकली एम्प्लॉयर ही अप्लाई करेगा। सो आपकी वेज तो नॉर्मल जो जैसे आती है ना, टैक्स NI वो तो नॉर्मल ही आएगी ना। मगर वो जो पैसे है वो एम्प्लॉयर लेगा ना HMRC से। दिस इज बिटवीन एम्प्लॉयर एंड द गवर्नमेंट। जी, एम्प्लॉयर एंड द गवर्नमेंट जी। मगर ये जो उसने सिर्फ ये है ना कि उसने थोड़ा सा अनाउंस किया, वो जो डेली अपडेट्स करते हैं इसमें वो चांसलर ने अनाउंस किया, उसकी वेबसाइट पे 1 पेज का उसने गाइडेंस दिया, मगर वो तो क्लियर नहीं है ना, इट्स नॉट क्लियर एट ऑल कि एग्जैक्टली हाउ इट्स गोइंग टू वर्क। मगर ये बात इट्स बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द गवर्नमेंट जो रिफंड की बात है। जी डेफिनेटली। जज़ाकल्लाह। बस मुझे ये क्लियर करना था कि हमें P60 वगैरह तो नहीं लगाना होगा। नहीं, वो ज़रूरी नहीं है, वो वीज़े के लिए नहीं, बिल्कुल नहीं। वो 3 एम्प्लॉयर्स लेटर, 6 मंथ्स वेज स्लिप्स, 6 मंथ्स बैंक स्टेटमेंट्स, वो ही सिर्फ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है और कुछ नहीं है। ओके, जज़ाकल्लाह खैर। नो प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू फॉर योर कॉल जी, थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। So just before we took the call, we were looking at the implications of the coronavirus and in particular on immigration matters. And what I was saying, the first point I was making was in relation to extension applications. It's crucial if your visa is expiring that you must apply in time. Now, the connected problem to that I was talking about was a lot of lawyers aren't seeing clients at the moment. Now, what I would do if the lawyer that you deal with is not, their office is closed down, they're not seeing clients directly, you may need to make a telephone appointment with them, but I'll come on to that in a second. Let me take my next call. Hello, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इलियास भाई कैसे हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, आप कैसे हो? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। इलियास भाई मेरा फ्रेंड वो इंडिया गया है। जी ठीक है जी। वो 90 डेज होने वाले हैं उसके जी। वो 2.5 महीना हो गया जी जी। तो इसकी रिटर्न टिकट थी पर वहाँ से आने नहीं दे रहे वो लोग। जी ठीक है। तो आपका जो फ्रेंड है उसके पास यूके में वीज़ा है, किस टाइप की वीज़ा है, क्या है उसका स्टेटस, क्या है उसका? रेसिडेंट परमिट है यहाँ पे, वाइफ शादी करके स्पाउस वीज़ा के ऊपर आया था। वो स्पाउस पे वो उसकी वाइफ ब्रिटिश है? जी। ऑलराइट, ओके। सो अभी उसका क्या सिचुएशन है? उसका कोई इंडेफिनिट के लिए अप्लाई करेगा, नेक्स्ट एक्सटेंशन के लिए करेगा? जी इंडेफिनिट के लिए अप्लाई करेगा। इंडेफिनिट के लिए करेगा, जी ठीक है। वैसे ये जो है ना, जो लिमिट कि अगर आपने यूके में शादी की वीज़ा पे आप यूके में हैं तो कितना टाइम के लिए आप यूके से बाहर रह सकते हैं, ये जो इश्यू है ना, इसमें इमिग्रेशन रूल्स में कोई टाइम लिमिट नहीं लिखी है। सो देयर इज नथिंग व्हिच सेज के अगर 3 मंथ्स से ज़्यादा हो जाएगा तो प्रॉब्लम है, 2 मंथ्स से ज़्यादा हो जाएगा तो प्रॉब्लम है। मगर मैं जनरली क्लाइंट्स को यही एडवाइस करता हूँ कि कॉमन सेंस अप्रोच लेना चाहिए आपको, कि ये वीज़ा इसलिए उसको दिया है कि वो यूके में दोनों हस्बैंड वाइफ रहेंगे। सो अगर ये हो जाए कि आप टू मच टाइम यूके से बाहर निकाल रहे हैं तो ये लोग ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं। इसलिए मैं जनरली क्लाइंट्स को कहता हूँ कि लुक, टू बी ऑन द सेफ साइड आप 3 मंथ्स एक्सीड ना करो 1 साल में। आपका फ्रेंड का जो सिचुएशन है वो तो ऑब्वियसली थोड़ा सा एक्सेप्शनल सिचुएशन है कि अभी वो वहाँ स्टक हो गया है। जैसे कि अगर कोई फ्लाइट सारी कैंसिल हो गई ना जी, वो फ़्लाइट्स कैंसिल हो गई, अगर वो एयरपोर्ट से भी कह सकते हैं कि आप जा सकते हैं, मगर वो एयरलाइंस अगर उसने एयरलाइंस ही बंद हो गई, वो एयरलाइंस कस्टमर्स को पिकअप ही नहीं कर रही है तो फिर कुछ नहीं कर सकता ना। सो उसका जो सिचुएशन है सिमिलर टू अगर कोई गया है इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश हॉलीडे के लिए और वहाँ बीमार हो गए, हॉस्पिटल में एडमिशन हो गया
और वो ट्रैवल ही नहीं कर सकता। सो वो दैट टाइप ऑफ सिचुएशन है कि एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस है। तो इसमें तो वो अप्लाई करेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी? नहीं, इंशाल्लाह नहीं आएगी। इसमें बेस्ट थिंग है जब अप्लाई करेगा फॉर्म में वो पूछते हैं कि आपका जो एब्सेंसेस है उसकी पीरियड बताओ, तो फिर लिखेंगे ना फ्रॉम दिस डेट टू दिस डेट, वो फिर बॉक्स होता है कि व्हाट इज़ द रीज़न। तो ये कहेगा ना कि मैं इनिशियली आई वेंट फॉर अ फैमिली विजिट but I wasn't able to travel back because of the problem relating to the coronavirus epidemic, which meant that flights were delayed and I was only able to come back instead of me wanting to come back after 3 months, I could only come back 5-6 months later. अगर आपके पास और टिकट है तो वो भी डाल सकते हैं। I think वो होम ऑफिस ये सिचुएशन में फ्लेक्सिबल होंगे। और अगर अभी कोई अप्लाई करना हो वीज़ा के लिए, क्योंकि अभी तो सारी ऑफिस बंद है ना जी, अभी बिग प्रॉब्लम है। और मैं जो ये शो में यही बात करने वाला था ना कि प्रॉब्लम क्या है कि लोग अगर किसी की वीज़ा फिनिश हो रही है तो उसको लाजमी अप्लाई तो करना ही पड़ेगा। अगर सोलिसिटर्स की ऑफिस बंद है तो वो सोलिसिटर के साथ बाय टेलीफोन अपॉइंटमेंट भी बना सकते हैं, उसको मिनिमम डॉक्यूमेंट्स भेज दे तो ऑनलाइन एप्लीकेशन वो सोलिसिटर्स डाल देंगे। अगर सोलिसिटर्स नहीं कर सकते तो आपको खुद करना पड़ेगा। मुझको लगता है ये कि नेक्स्ट वीक में, नेक्स्ट 2 वीक्स में होम ऑफिस मोस्ट लाइकली कुछ अनाउंस करेंगे कि अगर आपकी वीज़ा फिनिश होने वाली है ना तो वी आर ग्रांटिंग यू एन ऑटोमेटिक एक्सटेंशन। आई थिंक पॉसिबल है कि ये होगा ऑटोमेटिक। कि आप सोचो ना कि अगर उसने कहा कि लॉकडाउन आप ऑफिस में न जाओ, काम पे न जाओ, तो फिर जो क्लाइंट्स है जिसका एप्लीकेशंस डालना है, सम आर स्ट्रेट फॉरवर्ड, सम आर कॉम्प्लिकेटेड, वो कैसे डालेंगे, कैसे करेंगे? तो मुझको लगता है कि इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स ये होम ऑफिस वाले कुछ कंसेशन तो डालेंगे। वो कंसेशन उसका ये होगा कि हम ऑटोमेटिक एक्सटेंशन देंगे 3 मंथ्स के। बट लेट्स वेट एंड सी। जब तक ये उसने ये गाइडेंस इश्यू नहीं किया उसने ये एक्सटेंशन के बारे में, तो तब तक तो हमारी जो एडवाइस है कि यू हैव टू मेक श्योर कि आप एप्लीकेशन तो डाल दो ऑन टाइम। डॉक्यूमेंट्स, फिंगरप्रिंट्स वो तो सब बाद में कर सकते हैं 2-2.5 मंथ्स लेटर। ऑनलाइन एप्लीकेशन, पेमेंट लाजमी वो डाल दो आप। सो बट जी, थैंक यू आपके कॉल के लिए, थैंक यू वेरी मच इंडीड। नाउ सो that call relates to what I was talking about with those who are in the United Kingdom who need to submit their application, must be submitted in time. If there's a problem in that the lawyer that you normally engage is unavailable, to try and see whether you can have a telephone appointment with them and they can do it over the phone. Documents you can take a picture of, email it to the lawyer can look at it, get the application in. In terms of submitting documents, you're going to have plenty of time to do that. Generally you get 2.5 months anyway, and it may well be that with the problem that we have, you may have even longer to do that. But you must at the moment, unless there is different guidance from the Home Office, you must submit your extension applications in time. Now that's the issue with extensions. One of the other current problems with those who have submitted their extensions, and obviously the next step for anybody who's been through that process, they will know, is that you have to enroll your biometrics. You have to go into the visa center to submit your fingerprints and to enroll for your photograph to be taken, digital photograph to be taken. The problem at the moment is a lot of the visa centers are closed or are closing. And they are cancelling appointments, rearranging. So there are implications which arise from that. But what I'm going to do is we're going to be taking a short break. When I come back from my break, we'll look at what we do in relation to that particular problem. We'll be back in the next few minutes.